हेलो यार, बिल पत्र हमें कहीं नहीं मिले। थोड़ा अरेंज कर देना कहीं से, है ना? थैंक यू। अकाउंट के फुल थैंक यू। Okay. So good morning, friends. Once again, welcome back in social science subject live class. Okay, for standard 8. Just a minute, है ना? So I was waiting for few students to join the class. Okay, and because of that, I started 3 minutes late. What I promised for. Okay, so well, let us start the today's session, students. Okay. So yesterday, that is in our last live class. Just a minute. Let me switch off the fans. Okay, students. So in our last live class, okay, that held the day before yesterday. So we have discussed about the different farming systems. Okay, so we discuss about the agriculture, sericulture, pisciculture, viticulture, and horticulture. Okay, students. So let us see today the farm system. Okay. So the next topic that we are starting, okay, in today's session, and the topic is about the farm system. Okay, so agriculture or farming can be looked as a system. Now when we talk about system, it means we, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा? सिस्टम की, कोई एक सिस्टम है. सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, या उस पर्टिकुलर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होगा. सो व्हाट आर द थिंग्स विच कुड बी इंक्लूडेड इन ए सिस्टम. ठीक, सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है या किया जा सकता है. सो व्हाट आर द थिंग्स could be included in a system? Input, processing and output. ठीक है. सो एग्रीकल्चर को हम किसके रूप में? एक सिस्टम के रूप में डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. सो when we say system, farming is a system. Okay, so when we consider farming as a system, it means what? There is input. Okay, क्या होगा फार्मिंग में? इनपुट होगा. ठीक है. Now what are the things could be included in input? What are the things which could be included in input? Input of what? Farming system. Okay, so in farming, system, okay, inputs
include. Okay, in farming system, input include what? Okay, so include सीड्स. फार्मिंग सिस्टम में इनपुट में क्या आएगा? सीड्स आएगा. देन व्हाट इज फर्टिलाइजर्स. और क्या आएगा? फर्टिलाइजर्स. देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? मशीनरी. ठीक है. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? मशीनरी. एंड लास्ट इज व्हाट? labor. ठीक है. So what are the things which could be involved in farming system? Farming system में क्या क्या involve होगा बेटा? Seeds. Okay. Then fertilizers, machinery and labor. Okay. So these are the four important inputs which could be used in a farming system. ये चार इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं जो किसमें यूज होते हैं? फार्मिंग सिस्टम में यूज होते हैं. ठीक है. देन व्हाट इज प्रोसेस. ठीक है. अब क्या? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग इन अ फार्मिंग सिस्टम? सो द नेक्स्ट थिंग इन फार्मिंग सिस्टम इज व्हाट? प्रोसेस. ठीक है. सो फार्मिंग सिस्टम में अगली चीज जो होगी वो क्या होगी? प्रोसेस. ठीक है. सो व्हाट आर द थिंग्स इन्वॉल्वड इन फार्मिंग सिस्टम? ठीक है. सो प्रोसेस, सो इट इन्वॉल्व, ओके, इट इन्वॉल्व्स और इट इंक्लूड व्हाट? प्लगिंग. अब प्रोसेस में क्या होगा? प्लगिंग. सबसे पहले क्या करेंगे? प्लगिंग करेंगे, है ना. प्लगिंग के बाद क्या होगा? सोइंग ऑफ सीड्स. सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर? द नेक्स्ट प्रोसीजर इज सोइंग. देन व्हाट टू बी डन? सो इरिगेशन. फिर अगला काम क्या करना पड़ेगा? इरिगेशन का. ठीक है. देन weeding. And what is the last one? The last one is harvesting. ठीक है. So input में what are the things involved? Plugging, sowing, irrigation, weeding and harvesting. ठीक है. ये क्या हो गया? Process. So what are the inputs? इनपुट्स में क्या होगा? सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी एंड लेबर. प्रोसेस यानी क्या काम करना पड़ेगा? सो व्हाट आर द प्रोसेस? इट इन्वॉल्व प्लगिंग, ओके, देन सोइंग ऑफ सीड्स, ओके, एंड irrigation, then weeding, and next is what? Harvesting. Okay. Then next is output. Okay. So what is output? So the output from the farm system includes. So it includes. Okay. So आउटपुट फार्म सिस्टम में आउटपुट क्या होगा? सो इट इंक्लूड्स क्रॉप्स. ठीक है. यदि किसी प्रकार का कोई और एक्टिविटी हो रही है ना, फॉर एग्जांपल एनिमल रियरिंग, सो इट वुड बी वूल. ठीक है. वूल कहां से आएगा? शीप. देन डेयरी. डेयरी मींस व्हाट? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. Okay, and the last one is what? Poultry product. Okay, poultry product basically means rearing of those species of birds or animals. Okay, poultry product is basically rearing of those species of bird and animal which are used for, okay,
getting the flesh of it, or maybe their eggs are used. ठीक है, सो पोल्ट्री प्रोडक्ट में जैसे मुर्गी पालते हैं, है ना, अब मुर्गी के अलावा दैट इज हैन या कॉक के अलावा और भी बहुत सारे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, सो ऑस्ट्रिच फार्मिंग इज देयर इन सम प्लेसेस, मे बी द डक फार्मिंग इज देयर, सो वो सब किस में आएगा, पोल्ट्री प्रोडक्ट. ठीक है, गॉट इट. सो if we talk about farm system, if we talk about what, farm system, तो यदि हम किसके बारे में बात करें, farm system. So farm system comprises of 3 categories. Okay, or farm system can be divided into 3 steps. What are the 3 steps? Input, process and output. Okay, what is input? In farming system includes seeds, fertilizers, machinery and labor. Farming system में input में क्या क्या होगा बेटा, तो input में क्या क्या होगा, seeds, okay, then fertilizers, machinery और labor. ठीक, then प्रोसेस में क्या होगा, so it involve plugging, seed sowing, irrigation, weeding और हार्वेस्टिंग. फिर नेक्स्ट क्या है, आउटपुट. आउटपुट में क्या होगा, क्रॉप्स. ठीक है, यानी हमें फसल मिलेगी. ठीक, शीप रियरिंग कर रहे हैं तो वूल मिलेगा, एनिमल रियरिंग है तो डेयरी प्रोडक्ट दैट इज मिल्क और अदर एसोसिएटेड प्रोडक्ट, और यदि मांस और अंडे के लिए किसी एनिमल को रियर कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल पोल्ट्री प्रोडक्ट. ठीक है, इतना बात आया समझ में. ओके, नाउ सो यू कुड बी आस्क्ड विद ए क्वेश्चन. यदि एग्जाम में इसके बेस पर क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक्सप्लेन द फार्म सिस्टम. आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फार्म सिस्टम. ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द फार्म सिस्टम. समझ में आई बात, चलो. सो दैट इज व्हाट द टॉपिक ओवर, है ना, इतना ही हमें सिलेबस में दिया है फार्म सिस्टम में. चलो बेटा, सो नाउ वी विल टेक नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक बेटा, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग. What is the next topic बेटा, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना. अभी यहां पर जब हम इसको डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सो बेसिकली व्हाट डज इट मीन्स, हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द फार्मिंग. फार्मिंग मतलब जो खेती की जा रही है, एग्रीकल्चर, है ना, तो उसको करने के तरीके अलग अलग हैं. गॉट इट, ओके. सो डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. ठीक है, सो फार्मिंग को हम 2 मेन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन किसके बेस पर होगा, द क्लासिफिकेशन will be based on geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. ठीक है, ओके. सो what is farming, है ना. So farming can be
classified into farming can be classified into two main types. ठीक है, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स. ठीक है, बेस्ड ऑन. अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन किसके बेस पर कर रहे हैं? ओके, सो फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स based on, so what are the bases? Based on geographical condition. Okay, based on geographical condition. So it can be classified into two main types based on geographical condition. Then next is what? Demand of produce. Okay, demand of produce. Then labor means what type of labor is used. And the last one is level of technology. Okay, so farming can be classified into two main types. यानी फार्मिंग को जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किस बेस पर क्लासिफाई होगा, है ना? सो कौन कौन से बेस हैं? पहली चीज कौन सी देखी जाएगी? ज्योग्राफिकल कंडीशंस. ठीक है. सेकंड फैक्टर कौन सा देखा जाएगा? डिमांड ऑफ प्रोड्यूस. प्रोड्यूस मतलब उस खेती में से जो फसल निकल रही है उसकी कितनी डिमांड है. लेबर मीन्स उस एग्रीकल्चरल सिस्टम में काम किस तरीके से हो रहा है ना? ज्यादा लेबर लग रहे हैं, कम लेबर लग रहे हैं, क्या घर के लोग मिलकर के ही खेती पूरी कर लेते हैं या बाहर से लेबर लगाना है. एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, किस टेक्निक से क्या की जा रही है? फार्मिंग की जा रही है. Got it? So that is what the basis, that is the four factors or the four criteria, okay, on which the farming can be classified into two main types. ठीक है. So farming को क्लासिफाई करने के लिए ये चार क्राइटेरिया यूज होते हैं. Which are the criteria? Geographical condition. Second is demand of produce. Third is labor, and fourth is level of technology. Okay. Now, so these were the four criteria. ये चार criteria थे जिसके बेस पर फार्मिंग को क्या किया जा सकता है? क्लासिफाई किया जाता है. ठीक है बेटा. Now, so in how many types of farming can be classified? Two. अब वो कौन कौन से हैं? ठीक है. So the two classifications of farming are, ठीक है, तो फार्मिंग के जो दो क्लासिफिकेशन हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है. The first is what? Subsistence farming. What is the first classification? Subsistence farming. ठीक है. अब the next classification is what? Commercial farming. ठीक है. So that is subsistence farming, and second is what? Commercial farming. Got it, beta? So the farming can be classified into two types or two categories. What are the two categories?
subsistence farming and commercial farming. ठीक है. अब again the subsistence farming can be classified into two more categories. Subsistence farming can again be classified into two more categories. ठीक है. Subsistence farming को फिर से दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है. ठीक है. So what are the two divisions of subsistence farming? So the first is what? Primitive. Okay. Primitive subsistence फार्मिंग. ठीक है. तो जो पहला क्लासिफिकेशन है वो हम क्या करेंगे? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है. एंड द सेकंड क्लासिफिकेशन अंडर द सबसिस्टेंस फार्मिंग इज व्हाट? इट इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है ना. सो फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड, है ना बेटा. फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? टू कैटेगरीज. व्हाट आर द टू कैटेगरीज बेटा? सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग. व्हाट आर द टू कैटेगरीज? सबसिस्टेंस फार्मिंग, commercial farming. Again, the subsistence farming can be classified into two subcategories. So what are the two subcategories under the subsistence farming? So the two subcategories are primitive subsistence farming and intensive subsistence farming. Primitive subsistence farming and intensive subsistence farming. Okay, so these are the two subcategories within the subsistence farming. इतनी बात आई समझ. अभी यदि आपसे ओनली 2 मार्क्स में पूछा जाए, है ना, कितने नंबर में? 2 नंबर में या 3 नंबर में, कि explain the two types of farming. Okay, or in which two types farming can be classified. So जब आपसे पूछा in which two types farming can be classified, तो क्या बोलेंगे? Subsistence farming, commercial farming. Again, it can be classified into two subcategories: primitive subsistence farming and इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ठीक, ध्यान रखना इसको. ठीक है. अब बेटा यही का यही क्वेश्चन यदि आपको कितने मार्क्स का आ जाए? 3 मार्क्स का. एक्सप्लेन ब्रीफली द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है. तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? छोटी छोटी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. किसकी? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की और कमर्शियल फार्मिंग की. ठीक है. गॉट इट? ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द क्लासिफिकेशन, है ना. अब हम इस क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फार्मिंग के क्या डिस्कस करेंगे? डिफरेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो let us discuss first the features of subsistence. Just a minute. Okay, so the features of primitive subsistence farming.
ठीक है। तो पहले हम किसके बारे में डिस्कस करें? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या क्या होगा? ठीक है। सो फर्स्ट इज what are the features? The first feature is what? Low level of technology. ओके। सो जो पहला फीचर है ना, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में पहला फीचर क्या होगा? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। अब लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब खेती करने की जो टेक्नोलॉजी है, तरीके वो कैसे हैं? लो लेवल के। अब लो लेवल के मींस द प्रिमिटिव मेथड्स, primitive methods and old equipments, primitive methods and old equipments are used। ठीक है। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होगा? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसी होगी? लो। प्रिमिटिव मेथड्स एंड ओल्ड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड। अब लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से सेंस क्या है कि इसमें क्या होंगे? प्रिमिटिव, बहुत पुराने तरीके उपयोग होंगे, और उन पुराने तरीकों में क्या होगा? ओल्ड इक्विपमेंट, जो पुराने इक्विपमेंट्स हैं, खेती करने के जो पुराने औजार हैं, उनका यूज होगा। ठीक है। देन व्हाट इज द next feature? Okay, the next feature is what? Only the members of the family, only the members of the family provide labor। ठीक है। only members of the family provide labor। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब कोई एक फार्मर किस प्रकार की फार्मिंग कर रहा है? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो ही क्या करेंगे? लेबर मतलब खेती में काम करेंगे। व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इट मीन्स दैट कि बाहर से कोई भी मजदूर घर के सदस्य के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को खेती में काम करने के लिए सैलरी देकर के, पैसा देकर के इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है। देन प्रोड्यूस मतलब जो फसल है ना। सो प्रोड्यूस और फार्मिंग, पूरी की पूरी फसल या पूरी की पूरी खेती। सो प्रोड्यूस और फार्मिंग completely depends on natural conditions। ठीक है। प्रोड्यूस और सो प्रोड्यूस मतलब जो उपज, जो फसल हमें मिल रही है, तो पूरी की पूरी फसल या फार्मिंग, एंटायर खेती कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन, पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करेगा? नेचुरल कंडीशन। ठीक है। अब नेचुरल कंडीशन मींस फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, है ना। सो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, तो नेचुरल फर्टिलिटी के बेस पर क्या होगी? फार्मिंग। अब नेचुरल फर्टिलिटी मतलब जमीन की जो नेचुरल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, सिर्फ उसी का यूज होगा, अलग से कोई मैन्योर या केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा। ठीक है। फिर नेचुरल कंडीशन में और क्या आएगा? क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है। सो फार्मर क्या नहीं करेंगे? सेपरेटली कोई इरिगेशन वगैरह का
वहां पर इंतजाम नहीं करेंगे। तो इरिगेशन का कोई सेपरेट इंतजाम नहीं रहेगा, ठीक है। जो बारिश हो गई, जितनी बारिश हो गई उसके बेस पर ही क्या होगी, फसल पैदा होगी, ठीक है। सो प्रोड्यूस और फार्मिंग कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशन, ठीक है। तो नेचुरल कंडीशन पर पूरी की पूरी खेती डिपेंड करती है। व्हाट डज इट मीन्स कि एक बार खेत तैयार करके बीज डालने के बाद ना तो फार्मर उसमें कोई मैन्योर डालेगा, ना कोई फर्टिलाइजर डालेगा, ना ही सेपरेटली कोई इरिगेशन करेगा, ठीक है। सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशन। ओके, सो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज प्रिमिटिव मेथड्स एंड ओल्ड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड। ओनली द मेंबर्स ऑफ द फैमिली प्रोवाइड लेबर, सिर्फ घर के सदस्य ही क्या करेंगे, खेती में काम करेंगे। प्रोड्यूस और फार्मिंग कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। अब जब इतना सब होगा तो जो प्रोड्यूस है, प्रोड्यूस मतलब फसल, वो प्रोडक्शन कैसा होगा, हाई होगा या लेस, इट इज लेस। ओके, सो द ओवरऑल प्रोडक्शन, overall production is very less, ठीक है। अब चूंकि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फार्मिंग पूरी तरीके से किस पर डिपेंड है, नेचुरल कंडीशन पर, इसलिए क्या होगा, प्रोडक्शन इज वेरी लेस। इस प्रकार की जब फार्मिंग की जाएगी, इस प्रकार की जब खेती की जाएगी, तो किसान को प्रोडक्शन कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। गॉट इट? ओके, समझ में आ रहा है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट फीचर, द फीचर इज बेसिकली कि इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स मीन्स primitive subsistence farming includes, so it includes, यानी primitive subsistence farming में क्या क्या कौन कौन सी दो चीजें हैं। so it includes shifting cultivation, it includes shifting cultivation and nomadic herding, ठीक है। so it includes shifting cultivation and nomadic herding, ठीक। so primitive subsistence farming में, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, ठीक है, दो मेन टास्क हैं, दो तरीके से पीपल आर इन्वॉल्व इन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो व्हाट आर द टू वेज, द टू वेज आर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक काम कौन सा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, इज व्हाट, द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिस तरीके से किया जाता है इसमें ये सारे फीचर होते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिस तरीके से किया जाता है उसमें ये सारे फीचर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग का मतलब the people, and these are the special caste and communities, so they rear the animal, but the way of rearing the animal is basically complete depend on the natural condition, ठीक है। जानवर पालते जरूर हैं, बाकी साइंटिफिक मेथड, न्यू मेथड के जरिए नहीं, जो पुराना परंपरागत तरीका चल रहा है उसके जरिए एनिमल रियरिंग हो रही है। So that is what called as nomadic herding. Okay, so it includes the shifting cultivation and nomadic herding. ठीक है, so these are the 5 features of
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, ये किसके फीचर हो गए? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के। लाइकवाइज we'll discuss the features of intensive subsistence farming। इसी तरीके से हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। और फिर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सो 3 टॉपिक रहेंगे हमारे पास मेजर। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, पर मेन एक क्या रहेगा? Subsistence farming, second is what? Intensive subsistence farming, and third is what? Commercial farming। ठीक है, so बाकी के जो 2-3 फीचर हैं that we'll discuss in tomorrow's session, okay? Because the time is about to over, so that's all students for today class। Thank you, goodbye, stay safe and take care of your health। Thank you।